Among so many different systems in our body, the digestive system, the respiratory system, the circulatory system, and the nervous system, which one is the most important one? Hi everyone, I'm Rushali Jain and this video is brought to you by PsychLogic. In the previous videos, we have already talked about the neurons, the neurotransmitters. This video is going to be like the final piece of the puzzle. As in this video, we are going to talk about the system which controls every other system. The master system which is in charge of all the other systems. That is our nervous system. Our nervous system comprises of all the organs, nerves, the ganglia, the brain, the spinal cord, and as I said, this controls all the other systems. So all the activities that you're performing like walking, breathing, the heartbeat, everything is controlled by the nervous system. This nervous system is divided into two parts, that is central nervous system and peripheral nervous system. The central nervous system is like the master control unit because it comprises of the brain, the spinal cord and the brain stem. And जैसे इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ये बहुत ही सेंट्रल पोजीशन पे है, तो आपके सारे वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को यही सिस्टम डायरेक्ट कर रहा है. This system receives the sensory information and proceeds that information और वो motor signals send करता है वापस से. When we were talking about the types of neurons, I already told you कि जो भी sensory neurons information collect करते हैं, they send that information to our central nervous system and in return वो information process होने के बाद central nervous system हमारे motor neurons तक भेजता है. In this video, I'm just giving this brief information about the central nervous system because there are a lot of topics about the brain and the spinal cord that we need to understand. The detailed video on the brain and the spinal cord is there in the playlist. You can check it out. Now, the next system that we are going to talk about is the peripheral nervous system. Peripheral sounds like periphery, right? Which means outer limits, like bahar ka area jo bhi hai. So the peripheral nervous system is the outside of the central nervous system. And this is the link that the body makes with the outside world. मतलब जो भी हमारी nerves है, apart from the three parts of the central nervous system, सब कुछ हमारे nervous system का peripheral nervous system में आता है. And this again is divided into two types of systems, that is autonomic nervous system and somatic nervous system. एंड जैसे मैंने अभी बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन से जा रही है एंड वो मोटर मसल्स तक मोटर न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन वापस से ला रहे हैं. सो ये जो मोटर न्यूरॉन्स है या जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, ये सब हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं बिकॉज दे आर कलेक्टिंग द सिग्नल्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड सेंडिंग इट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो ये जो सेंडिंग एंड रिसीविंग वाला काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कर रहा है, वो कॉन्टैक्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ है. इसको इजीली ऐसे समझिए, जो भी इंफॉर्मेशन आउटसाइड वर्ल्ड से आ रही है वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा रही है एंड वहाँ से जो भी कमांड्स हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे बाकी ऑर्गन्स तक वापस आ रहे हैं. Now let's talk about the two types of peripheral nervous system, that is somatic nervous system and autonomic nervous system. First we've got somatic nervous system, जिसका main function है हमारी सारी sensory information को हमारे central nervous system तक लेके जाना and वहाँ से motor neurons के through motor muscles तक information को direct करना. And this is controlling all the voluntary movements. Like you're watching this video voluntarily. And along with all the voluntary movements, हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे रिफ्लेक्सेस को भी हैंडल करता है. रिफ्लेक्सेस आर ऑल्सो इनवॉलंटरी, बट ये इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हमारी हार्ट रेट, हमारी डाइजेशन की जैसी एक्टिविटीज नहीं है. अगर आप कोई भी हॉट चीज टच कर रहे हो, उस केस में हमारे रिफ्लेक्सेस काम कर रहे हैं. वहाँ पे हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, ना कि ऑटोनॉमिक. अब ऑटोनॉमिक साउंड सिमिलर टू ऑटोमैटिक, राइट? इसका फंक्शन भी ऑटोमैटिक ही है, which means it regulates all our involuntary body responses जैसे heart rate, digestion, respiration. हमें ये सब कंट्रोल नहीं करना पड़ता ना, ये हमारी चॉइस से नहीं हो रही हैं ये चीजें. These are all automatic. हमारी बॉडी खुद से ये चीजें कर रही है. Now let's talk about the two segregations of the autonomic nervous system, which is the sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. And हमारा autonomic nervous system क्या कंट्रोल कर रहा है? all the involuntary movements जैसे heart rate, digestion, pupil dilation, breathing,
all of this. Our sympathetic nervous system is also called the fight or flight system because ये हमारी सारी fight और flight वाली situation में हमें help कर रहा है. And parasympathetic nervous system is also known as rest and digest system because ये हमें normalize होने में help करता है. अब इन sympathetic and parasympathetic nervous system के functions को समझने के लिए let's take help of a situation. Let's go back to our old school days जब हमारे recitation and reading के exams भी होते थे, remember? And जैसे जैसे हमारी turn पास आती थी, हमारा heart rate और बढ़ जाता था, sweating increase हो जाती थी, हमारे pupils भी dilate हो जाते थे, and इस duration में हमें भूख प्यास कुछ नहीं लगती थी, right? So here we understood all the functions of the sympathetic nervous system. Because वो एग्जाम हमारे लिए एक फाइट और फ्लाइट सिचुएशन क्रिएट कर देता था, सो हमारी बॉडी उसको एक थ्रेटनिंग सिचुएशन की तरह डील करती थी, जिसमें क्या क्या होता है, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, हमारे प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, द स्वेट ग्लैंड्स गेट एक्टिवेटेड एंड लेस इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब कुछ अभी बॉडी पोस्टपोन कर देती है कि अभी तुम्हारी नीड नहीं है, वील डील विथ यू लेटर ऑन. बट ये फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में हम हमेशा तो नहीं रह सकते ना, हमारी बॉडी को नॉर्मलाइज वापस भी तो होना है. एंड जब हम नॉर्मलाइज होते हैं तो धीरे धीरे हमारी सारी फंक्शनिंग नॉर्मल हो जाती है, जैसे हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल हो रही है, हमारा हार्ट रेट नॉर्मल हो रहा है, स्वेटिंग बंद हो रही है, ब्लड फ्लो थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है, प्यूपिल्स कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं. दिस इज द फंक्शन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब बॉडी को अराउज्ड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में वापस लाना. सो दिस वाज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम्स. Now another important thing to know here is the types of nerves that are there in the peripheral nervous system. यहाँ पे two types of nerves function कर रही हैं, that is spinal nerves and cranial nerves. You can remember the placement of these nerves just by the names. Spinal nerves मतलब ये spine के around है and cranial nerves हमारे head and neck muscles तक हैं. We don't need to know a lot of details about these nerves. बट एक ओवरव्यू जरूरी है जानना. ये प्लेसमेंट इनकी एरिया ऑफ फंक्शन बेसिकली डिस्टिंग्विश कर रही है. आवर स्पाइन इज नॉट जस्ट वन स्ट्रेट बोन, रादर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल बोन्स एंड उनके कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं जो हम स्पाइनल कॉर्ड में भी सेम नेम्स पढ़ेंगे. एंड यहाँ स्पाइनल नर्व्स में भी ये सिमिलर नेम्स हैं, जैसे सर्विकल नर्व्स, thoracic nerves, lumbar nerves, sacral nerves, coccygeal nerves. For more details about these nerves, you can check out the notes. Moving on to cranial nerves. As I already told, these are the ones that are there in your head and neck area. And there are 12 cranial nerves, which is olfactory, optic, oculomotor, abducen nerves, vestibulocochlear, glossopharyngeal nerves, hypoglossal nerves, vagus nerves, spinal accessory nerves, facial nerves, and trigeminal nerves. The cranial nerves and spinal nerves are very different from each other. The spinal nerves are entering the spinal cord. They are reaching the spinal cord first and then they are contacting the brain. But the cranial nerves are directly contacting the brain. Spinal cord के साथ उनका कोई connection नहीं form हो रहा है. So that's it for today. You can click on the link given in the description box to get access to your free lecture notes, which are prepared in detail for you to ace your exams. Don't forget to join us on WhatsApp, Instagram, Telegram, and YouTube, of course, as we are dedicated to complete the course before your exams. Stay tuned. Happy learning!